Good morning. My name is Vidya Shah. I'm delighted to be here to open today's session with some music. I will be presenting verses from the Nirgun Bhakti tradition. Nirgun, very briefly, is the idea of looking for a spiritual journey, a mentor, without a form. You're not looking at a Krishna or a Ram or a Sita or a Shiva or whoever else that you may believe in. So Nirgun really reaching out to the formless, looking for that spiritual journey rooted in metaphor. The first one is a 15th century poet, Kabir, and it's the idea of creation, where Kabir says, "Is ghat antar baag bagiche." It is within this pot. He defines the idea of creation as a pot, as a clay pot, and says, it is within this pot that you find the entire beauty of creation. On the guitar with me and banjo is Amar Sangam, and dholak, dafli and an array of percussion is Satish Solanki. It's always wonderful to be here in Jaipur, and I'm thankful to all my dear friends, Sanjoy, Badiam, all these people who make this possible for me. So as we say, Ijazat, and begin with Kabir. इस घाट अंतर बाग बगीचे इसी में सृजन हारा इस घाट अंतर बाग बगीचे इसी में सृजन हारा इस घट अंतर सात समुंदर इस घट अंतर सात समुंदर इसी में 9 लाख तारा इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सृजन हारा इस घट अंतर सात समुंदर इसी में 9 लाख तारा इस घट अंतर बाग बगीचे
इस घट अंतर पारस मोती इस घट अंतर पारस मोती इसी में उठत फुवारा इस घट अंतर पारस मोती इसी में उठत फुवारा कहत कबीरा कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो इसी में साई हमारा इस घट अंतर बाग बगीचे इस घट अंतर पारस मोती कहत कबीर सुनो भाई साधो इसी में साई हमारा इस घट अंतर बाग बगीचे Thank you. The next one that we're going to present is from a 7th century Sufi poet, Rabia al-Basri. As the name suggests, she came from Al-Basra, which is now I think in Iraq. It is really her story of struggle in this song, where she says that she's willing to give up this worldly life, to seek this pursuit, to seek this light. She defines a spiritual mentor as this light that she's running after. And in this search, she's willing to give up everything that she has, including the clothes that she's wearing. She says, I'm willing to give up everything, take even what I'm wearing. And just to find that light, who she defines as More Sain. So, bas tu hi More Sain. Tum jahan ho, parkash bhayo sab thai. Wherever you are, fills up with light. So her idea of the spirituality is this light. So Rabia al-Basri. बस तू ही मोरे साईं।
बस तू ही, 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 मोरे साये, बस तू ही, बस तू ही, बस तू ही, मोरे साये, ध्याऊं तुझे, तुझे ही पाई, ध्याऊं तुझे, तुझे ही पाई, बस तू ही, 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 मोरे साये, ध्याऊं तुझे, तुझे ही पाई, ध्याऊं तुझे, तुझे ही पाई, कछु बस तू ही, बस तू ही, बस तू ही, बस तू ही मोरे साई, बस तू ही, बस तू ही, बस तू मोरे साई, मोरे साई, बस तू ही, बस तू ही, बस तू ही, बस तू अचरज वस्त लिखी परलोके, अचरज वस्त लिखी परलोके, दई दे मीतन सबहु ओके, दई दे मीतन सबहु ओके, बस तू ही, ध्याऊं तुझे, तुझे ही पाई, बस तू ही, ध्याऊं तुझे, तुझे ही पाई, बस तू ही, कछु और न चाह
बस तू ही, बस तू ही, बस तू ही मोरे साई, ध्याऊं तुझे, तुझे ही पाई। अंगना मोरा, अंगना मोरा भरी गयो, भरी गयो। अंगना मोरा भरी गयो, प्रकाश भयो सब थाई, प्रकाश भयो सब थाई, थाई। प्रकाश भयो सब थाई, प्रकाश भयो, प्रकाश भयो, प्रकाश भयो, प्रकाश भयो सब थाई, थाई, थाई। बस तू ये, 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 बस तू ये। Thank you. The Nirgun, or this kind of poetry, was largely medieval mystic poetry. But there have been more recent attempts to interpret the idea, the philosophy. The next one that I'm going to sing is a completely unusual one that I found by, it was a sheer chance, a Pakistani poet, Faiz Ahmed Faiz, who has written this beautiful tribute to Amir Khusro. And he calls it Nazr-e Khusro, to as in to Amir Khusro, dedicated to Amir Khusro. So that's the one that we are going to be presenting next. Thank you all for coming so early in the morning. It's so cold that I'm really grateful that you still bothered to come and beat the wind and the cold. And सुनो मोरी अरज, सुनो मोरी अरज, सुनो दस्तगीर पीर मोरी अरज, सुनो दस्तगीर पीर माई रे कहूँ कासे मैं, माई रे कहूँ कासे मैं अपने जिया के पीर मोरी अरज, सुनो मोरी अरज, सुनो दस्तगीर पीर माई रे कहूँ कासे मैं, माई रे कहूँ कासे मैं अपने जिया की पीर मोरी अरज, सुनो
दस्तगीर पीर माई रे कहूँ कहाँ से मैं अपने जिया की पीर मोरी अरज सुनो नैया बांधो रे नैया बांधो रे किनारे दरिया नैया बांधो रे किनारे दरिया मोरे मंदिर अब क्यों नहीं आए मोरी अरज सुनो नैया बांधो रे किनारे दरिया मोरे मंदिर अब क्यों नहीं आए मोरे अरज सुनो दस्तगीर पीर मोरे निसा रे मा पद मा प मा रे मोरे मा प नि द पद मा प मा रे स नि स रे मोरे अरज सुनो इस सूरत से अर्ज सुनाते दर्द बताते नैया खेते इस सूरत से अर्ज सुनाते दर्द बताते नैया खेते मिन्नत करते रास्ता तकते मिन्नत करते रास्ता तकते इतनी सदियाँ बीत गई है इतनी सदियाँ बीत गई है तब जाकर ये भेद खुला है इतनी सदियाँ बीत गई है तब जाकर ये भेद खुला है मोरी अरज सुनो मोरी मोरी अरज सुनो दस्तगीर पीर मोरी अरज सुनो अरज सुनो अरज सुनो Thank you. Thank you. And the last one that there's already like all that happening, so I shall behave. The last one that I will be singing this morning. The other thing which is wonderful, I think, and it's not very often that you sing to lovely audiences like this in the morning. So I was just going to say the last one this evening. It's wonderful to be able to do some morning music. The last one this morning is a composition of a very, very legendary Indian musician who took this kind of devotional music to another level, who brought classicism to it like never before. And his approach, his rendition of this poetry is just
stunning, beautiful. Pandit Kumar Gandharv. I will be singing Kabir, which is originally rendered by this legend, Pandit Kumar Gandharv. Hirana samajh boojh ban charana.
हीरना 25 हीरनी है हीरनी 5 हीरना 25 हीरनी उनमें एक चतुर हीरना कहे कबीरा जो सुनो भाई साधो साधो सुनो भाई साधो कहे कबीरा जो सुनो भाई साधो कहे कबीरा जो सुनो भाई साधो गुरु के चरण चीत धरना हीरना गुरु के चरण चीत धरना हीरना हीरना समझ बूझ बन चरना हीरना हाँ हीरना हाँ हीरना Thank you all for being here. Thank you very much.